औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टीचर डे का टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 82 देखें। नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन to form ammonia. The ratio between the number of moles in 1:3, it means that 1 mole of nitrogen combined with 3 moles of hydrogen. But the amount of nitrogen given is 4 liters. It is 4 liters, and the number of liters of hydrogen are 6 liters. इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए आप इस 4 को इस कोएफिशिएंट पर डिवाइड करें, यू विल गेट 4, और इसके लीटर्स को आप इस कोएफिशिएंट पर डिवाइड करें तो इससे 2 आता है। तो जिससे कम आंसर आएगा, लोअर वैल्यू जिससे आएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस केस। अब आप देखिए बेटा, हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल्स में रेशो क्या है? 3:2, यानी इससे 3 मोल से इसके 2 मोल बनेंगे। सो इफ इट इज 6 लीटर तो इसके कितने लीटर बनेंगे? तो इससे 4, 3 से 2 तो 6 से 4 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, आप देखें KClO3 और ऑक्सीजन के मोल्स के दरमियान 3:2 है। इसके 3 मोल बनाने के लिए यू नीड 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, और इसके 12 मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? तो ये हो जाएगा 3x = 24, 24 डिवाइडेड बाई 3 = 8 मोल्स। तो 83 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, वी हैव 2 moles of water produces 1 mole of oxygen। 3.6 ग्राम वाटर है, इससे मोल्स बनाए। सो इट इज 0.2 moles ऑफ वाटर, 0.2 मोल ऑफ वाटर। आप देखें इसके 2 मोल से 2 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एंड 0.2 मोल ऑफ वाटर विल फॉर्म 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ he is asking about the volume of oxygen। 1 mole of oxygen का वॉल्यूम STP पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 0.1 का कितना होगा? x। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x will come out to be 2.24 डेसीमीटर क्यूब, एंड ऑप्शन नंबर 84 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन number 85, nitric acid can be produced from the following reaction: 3NO2, 3 moles of NO2 form 2 mole of nitric acid। If you are given 200 gram of NO2 तो इससे मोल्स बनाएं। 200, इसका मोलर मास 32 + 14 46 आता है। 46 पर डिवाइड करें, यू विल गेट 4.3 मोल्स। तो आप देखें NO2 और HNO3 के मोल्स के दरमियान रेशो है, इसके 3 मोल से इसके 2 मोल्स बनते हैं, इसके 4.3 मोल से इसके x मोल बनेंगे। 3x = 2 × 4.3, x = 2 × 4.3 divided by 3, and you get 2.8, x = 2.8। तो 85 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 86, लीस्ट बॉन्ड एंगल किस में है? देखो आपको पता है मीथेन में द एंगल इज 109.5, वाटर में 1.05, NH3 में 107.5 और 0.3, H2S में तकरीबन 92 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, which set of condition promote fastest reaction for the Haber process? So you need high temperature, you need catalyst and high pressure. These are the required conditions for the reaction. 88, an a cubic lattice, an atom lying at the corner. Cubic lattice में ये हमारे पास एक cubic lattice है, तो कार्नर के ऊपर जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट्स। ये 8 यूनिट सेल में क्या होगा? शेयर होगा। देखिए बेटा, आपके साथ फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर पे आपके साथ 4 रूम्स हैं। ये 4 रूम मीन यू हैव 4 यूनिट सेल्स, और फिर यहाँ पर एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल इस और ये चारों यूनिट सेल में शेयर्ड होगा, तो हर यूनिट सेल का इस पर अपना अपना शेयर है। इसमें ये 4 रूम्स हैं या 4 यूनिट सेल हैं, इस तरह 1 2 3 एंड 4। फिर इसके ऊपर 4 और यूनिट सेल हैं, ये नीचे हैं, ये डॉटेड 4 यूनिट सेल इन 4 यूनिट सेल के ऊपर हैं। तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए? 4 नीचे 4 ऊपर। नाउ दिस पॉइंट और दिस एटम इज टचिंग 8 यूनिट सेल एट द सेम टाइम। तो इस यूनिट सेल का 1/8 इसके साथ काउंट होगा, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8। टोटल यूनिट सेल 8 है, और इसका हर एक यूनिट सेल इस यूनिट सेल का इसमें कितना हिस्सा बंद है? 1/8। सो इट इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। 89, which one of the following classification is not correct? ग्लूकोज इज कोवेलेंट सॉलिड, ये बात गलत है। Glucose is not covalent solid. It is an example of molecular solid. Question number 90. Which one of the following? Question number 90. All of the following has standard heat of formation value 0 at 1 atmosphere. तो ये याद रखें कि हर एलिमेंट जब प्योर फॉर्म में होता है और नेचुरल फॉर्म में उसका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन द हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0 फॉर ग्रेफाइट, नॉट फॉर डायमंड। डायमंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, डायमंड इज लेस thermodynamically less stable form of carbon. Graphite is most stable form of carbon. So for graphite, the standard heat of formation is taken as 0. For diamond, it is not 0. Question number 91. All of the following have question number 90 में option number D. Question number 91. A subshell for which n is equal to 2, यानी ये सेकंड ऑर्बिट में है, L is equal to 1 mean P subshell है, तो this represents 2p, n is equal to 3 है, so this represents 3p subshell. Option number A is correct. Question number 92. ये आपका लंबा चौड़ा रिएक्शन है, Fe3O4 plus CO 3FeO and plus
CO2 कहता है कि इसका डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपने फाइंड करना है। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द reactants. Delta H will be equal to heat of formation of iron oxide multiplied by 3 plus heat of formation of carbon dioxide multiplied by 1. These are the products. Minus heat of formation of Fe3O4. We have 1 mole multiplied by 1 and plus heat of formation of carbon monoxide multiplied by 1. You are given the heat of formation of this minus this one and this one. You put the values and the answer will be 19 kilojoules. Option number C is correct. Question number 93. Boyle's law P1V1 is equal to 1BT है 2B over 3B. So option number D is correct. Question number 94. What is the density? PM is equal to DRT. D is equal to pressure, molar mass divided by gas constant, temperature. Put the values. Option number C is correct. You will get 3.5. So density can be calculated by this formula. Question number 95. How many parameters are used to identify a unit cell? A, B, C, alpha, beta and gamma. These are called unit cell parameters, with the help of which you can identify a unit cell. For example, if A is equal to B is equal to C, alpha, beta and gamma are 90, so it is cubic. So they are called latest parameters and they are 6 in number. 96, 1 psi. देखें, 1 atmosphere pressure is equal to 14 psi. 14 psi is equal to 1 atmosphere is equal to 1325 pascals. Yeah, 14.7 psi is equal to 1.325 kilopascal. Yeah, 1 psi will be equal to 101.325 divided by 14.7 is equal to 6.8 kilopascals. So option number B is correct. Question number 97. Liquid with highest vapor pressure. तो देखो साइक्लिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, दे हैव लोअर वेपर प्रेशर. नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. आइसो यानी जो ब्रांच आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एंड डेट विल हैव हाई वेपर प्रेशर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टर्मिनल अल्काइन. तो टर्मिनल अल्काइन जो है दे आर नॉट एसिडिक एज अल्केन, ये बात गलत है. टर्मिनल अल्काइन आर मोर एसिडिक देन अल्केन, ये बात ठीक है. बट दे आर नॉट एज एसिडिक एज अल्केन, ये बात गलत है. टर्मिनल अल्काइन आर क्वाइट एसिडिक. एसाइल बेंजीन, जब बेंजीन के साथ ये ग्रुप अटैच करें, दिस इज कॉल्ड एसाइल बेंजीन. So this is obtained by when you combine benzene with carboxylic acid halide. Acid halide और benzene के रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है. This is Friedel-Crafts acylation reaction. So option number D is correct. 100. How many aromatic isomers are there for dibromobenzene? तो एक होगा आर्थो डाई ब्रोमो, एक होगा मेटा डाई ब्रोमो और पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन. सो इट विल हैव 3 आइसोमर्स. तो 100 में
Question number 100 में option number B is correct. For dibromobenzene, you have three isomers: orthodibromo, metadibromo, and para-dibromobenzene. Question number 101. Which one of the following combination cannot produce a buffer? Option number C. HCl is a strong acid. बफर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज नहीं करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे. 102. द स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेल पोटेंशियल अ डबल लाइन. ये जो डबल लाइन होता है ये असल में साल्ट ब्रिज को जाहिर करता है. फॉर एग्जांपल इन द जिंक copper cell, the symbol is like this one: 1 molar, 1 molar. This is the Daniel cell. This double arrow is for salt bridge. So option number D is correct. 103. SnOH whole 2 form Sn plus 2 plus 2OH negative. Kp will be equal to Sn plus 2 and OH negative raised to the power 2. So option number C is correct. Question number 104. Which one of the following is false regarding galvanic cell? The galvanic cell में spontaneous reaction होता है. कौन सा reaction होता है? Spontaneous reaction. और इस spontaneous reaction के नतीजे में आपको क्या मिल जाता है? You get electrical energy. अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और सरफेस एरिया हैव द इफेक्ट बट मॉलिक्यूलरिटी हैज नथिंग टू डू विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? It is the number of molecules taking part in the rate determining step, the slow step. जो slowest step होता है तो उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं. तो मॉलिक्यूलरिटी का रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता. 106. The activation energy for the forward reaction. This is the energy of activation for the forward reaction. This is for example 30, and this is the activation energy for the reverse reaction. It is 40. This is 30, this is 40. इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की हीट एनर्जी जो है, प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, तो आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा. 106 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सोडियम परऑक्साइड, परऑक्साइड का कलर येलो होता है और सुपर ऑक्साइड जो है दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. सुपर ऑक्साइड गिव ऑक्सीजन. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 108. विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द फर्स्ट ए ग्रुप? फर्स्ट ए ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होती? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सब कम होते हैं, लेकिन एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज, मतलब ये कि जितना आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो द एलिमेंट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन. तो लोअर एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रुबीडियम ये जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम. 109. विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इम्पॉर्टेंट वायलेट कलर? पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं उनका कलर वायलेट होता है. 110. द लीस्ट आयनिक, बेरिलियम का साइज छोटा है तो बेरिलियम क्लोराइड इज लीस्ट आयनिक, बल्कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है.
बाकी सारे क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये सारे आयनिक हैं. But the compounds of beryllium are covalent because of greater charge density of beryllium, a smaller size of beryllium. Compounds of beryllium are covalent in nature. 111. Dash product is formed when aldehyde reacts with alkyl amine in acidic medium. जब आपके साथ this is suppose an aldehyde और आपके साथ ये अल्काइल एमाइन है, दिस इज एमाइन एंड दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट. तो आप देखें ये H2O बना देगा और प्लस RCH डबल बॉन्ड N and R. So this compound is called imine and imines are called Schiff bases. So this is a Schiff base. B option. 112. Which method is good for the preparation of aldehyde? देखें अगर आप अल्कोहल के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सोल्यूशन यूज करें तो ये अल्डिहाइड तो बनाएगा लेकिन फौरन इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है. अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनाए लेकिन फर्दर प्रोसेस ना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपने पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करना होगा. ये अल्डिहाइड स्टेज पर रिएक्शन को स्टॉप करता है, फिर फर्दर रिएक्शन नहीं होगा. So PCC is a good reagent to convert alcohol into aldehyde. Why this is not good? Because it will further oxidize the aldehyde to carboxylic acid. So option number B is correct. 1-3. Identify. आपके साथ 2-butene है. This is 2-butene. अगर आप इसकी ओजोनालिसिस करें तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा and you will get CH3C double bond OH acetaldehyde. ये पार्ट भी acetaldehyde में कन्वर्ट होगा ये, so you will get 2 moles of acetaldehyde and this one oxygen will react with zinc to form zinc oxide. So the best reagent to convert butene into aldehyde is option number A is correct. Question number 114. Which is a necessary condition for bromination of phenol? तो phenol की bromination जो है, either we brominate the phenol in the presence of water, bromine water, but in this case you will get 2,4,6 dibromophenol. But if the same reaction is carried out in the presence of non-polar solvent carbon disulfide, you get a mixture of 2-bromophenol, yeah, meta orthobromophenol and para-bromophenol, and this para-bromophenol is 86%. This is more stable isomer of the bromophenol. So if you are going to form this product, you have to use water as a solvent. If you have to replace one hydrogen by one bromine and polysubstitution is for example not desired, then you will be using non-polar solvent. But the major product will be the para-bromophenol. So you should use either this solvent or this solvent. D option is correct. Question number 115. Alcohol on intermolecular dehydration. When two molecules combine in the presence of sulfuric acid, this temperature required is 140 degrees centigrade.
OH goes from one alcohol and the H from other alcohol. You will get water and plus ether. This type of reaction is called intermolecular dehydration. On the other hand, if you have ethyl alcohol and you use H2SO4, 175 degrees centigrade, then OH goes from here and H goes from here, water is formed, you will get ethene, and this is called intramolecular dehydration. Intramolecular dehydration. From the same molecule, a water is lost. So 115 में option number C. That is on intermolecular dehydration you will get ether, on intramolecular you will get alkene. Question number 116. Which one is the least acidic? एक आपके साथ phenol है. The other one is fluorophenol. The second isomer is nitrophenol, paranitrophenol, parachlorophenol. Remember, any electron with drying group, these are electron with drying group, they increase the acidity. So this one is the least acidic. By attaching electron with drying group to a compound, the acidity will increase. 117. Tertiary alcohol. देखें, ketone or Grignard reagent form tertiary alcohol, and you got the point. Tertiary alcohol cannot be prepared. So methyl formate, this is called methyl formate plus Grignard reagent. It in the first step form aldehyde, and the second step it will react with another equivalent of Grignard reagent and it will form secondary alcohol. And the carboxylic acid with the reaction of lithium aluminium hydride, they convert into primary alcohol. So neither methyl formate and nor carboxylic acid form tertiary alcohol. So option number D is correct. 118. Which one of the following are favored by polar aprotic solvent? So protic solvent जो होते हैं ना, they will favor SN1 mechanism. Aprotic solvent will favor SN2 mechanism. Aprotic solvent यानी जो proton donor ना हो. Water is a protic solvent, but dimethyl sulfoxide ये polar है, but it is aprotic, so it will favor SN2 mechanism. Question number 118 में option number B is correct. Question number 119. Acetic acid is obtained by which reaction? Yes, when acetaldehyde is oxidized, you will get acetic acid. Methyl alcohol को अगर आप PCC के साथ ऑक्सीडाइज करें तो इससे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा. और सोडियम एसीटेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं सो यू डोंट गेट द acetaldehyde, you don't get acetic acid. Question number 120. Esterification of alcohol. Esterification is the reaction of alcohol. Remember, आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल मिलाते हैं in the presence of H2SO4, you get ester. This reaction is called esterification. But at the same time, if you have acid chloride or acid halide and you combine with it alcohol,
then H and Cl will form HCl, and you will get RC double bond OOR. Again, ester is formed. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दोनों से एस्टर बनेगा, even from the carboxylic acid and also from the acid halide. Acid halide से आसानी से एस्टर बनेगा, because acid halide are more reactive as compared to the carboxylic acid. 121. Which one of the following is example of meta directing group? ये आपके साथ साइनाइड ग्रुप है. आपके साथ जब कोई ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के साथ, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग है कि ये आर्थ पैरा डायरेक्टिंग है? तो देखें, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव. तो जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो, डायरेक्ट इसके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसके साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फिर अटैच हो, सो सच अ ग्रुप विल बी मेटा डायरेक्टिंग. इसी तरह आप अगर NO2 में आप देखें तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव and oxygen is more electronegative. So when to benzene ring a less electronegative atom is attached directly, then it will be meta director or meta directing group. 121 में option number A is correct. 122 the nylon 66 और एक nylon 610 होता है. तो 610 में you have CH2 6NH2 1,6 डाइअमीनोहेक्सेन इसको कहते हैं. इसमें 6 कार्बन हैं, बट यू विल हैव CH2 8 C double bond O Cl and C double bond O Cl. So this is obtained by the hexamethylene diamine, and this is called decan डाइओइल डाइक्लोराइड, या इसको कहते हैं सेबकाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है. ये 10 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को सेबकोइक एसिड कहते हैं. तो ये सेबकाइल क्लोराइड हो जाएगा या डीकैन डाइओइल डाइक्लोराइड. क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है और यहाँ पर 10 कार्बन है, तो आपके साथ जो नाइलॉन बनेगा उसका नाम होगा 610. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाई स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड लोन फॉर लंदन, क्योंकि इनिशियली नाइलॉन इन दो जगहों में ज़्यादा मिकदार में बनाया जाता था इनिशियली, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो नाइलॉन है. ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. 123 प्रोटीन जो है ये हेटेरोपॉलीमर है. इसकी वजह ये है कि इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड, यानी कोई एक अमाइनो एसिड नहीं होता जिससे प्रोटीन बनता है. To a variety of amino acid, different type of amino acid. So therefore it is called heteropolymer. The rate constant is rate constant का जो यूनिट होता है ना पर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करता है. Sometimes we identify the order of reaction from the unit. अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर K का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, तो फिर ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड. अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड इसका यूनिट होगा. क्वेश्चन नंबर 125. In the primary structure of protein, the amino acid molecule join together forming peptide bonds. So option number A is correct. 126
Emulsion adhesives are those adhesives which are dissolved in the solvent but their solubility is less. So they don't make solution, rather they will make an emulsion. And that emulsion is applied to the surface, and these type of adhesive will join the two surfaces together when they dry. So on drying, they are called drying adhesives. They are called actually solvent adhesive. Solvent adhesives. So this one polyvinyl acetate is an example of emulsion adhesive because it does not completely dissolve in the solvent. It forms an emulsion with water. So this was the last question of the today's discussion और उम्मीद है आप सब समझ चुके होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।